Hey, folks. For those of you who know me, that's awesome. For those of you who do not know me, I'm Asran. I'm based in Islamabad. I'm a former software engineer who moved into the teaching industry. So I'm currently a developer advocate. I have experience working with companies like GitHub and Vercel, the company behind Next.js. So yeah, that's a bit about me. And I also teach people how to code through my Instagram. And yeah, so I will be your instructor for the JavaScript course, and I will be teaching you everything about JavaScript. So this is a course which is for someone who has some idea about CSS, JavaScript, etc. Speak in native language. ठीक है sir. So yeah, this is a course जो कि it's for someone जिसको थोड़ा बहुत idea है about JavaScript and CSS and HTML and wants to get into React.js, or if you're someone जिसको React.js में career बनाना है या job चाहिए, so this is the course for you. आपको अगर React का कुछ नहीं पता, so this is the course for you. We will start with the very basic things. हम start करेंगे with the very general overview of like जो hands-on से पहले वाली चीज़ें हैं. What is React? Why React? What are the alternatives like Angular ho gaya, Vue ho gaya, etc. We will talk about all those things. We will also talk about के React इतना पॉपुलर या फेमस क्यों है एंड क्या उसकी रीज़न है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है व्हेन यू लर्न React.js किसी भी जगह से. सो क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं और किस तरह की एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, किस तरह की कंपनीज जो है वो यूज़ करती है. एंड मे बी दिस इज समथिंग जो कि मैं भी आपको आइडिया दे सकता हूँ. React.js जो है, इट्स अ फ्रेमवर्क, इट्स अ लाइब्रेरी जो कि फेसबुक ने बनाई थी. इनिशियली इट वाज फॉर फेसबुक इंटरनली. उन्होंने इंस्टाग्राम पे उसको स्टार्ट किया टू इम्प्रूव इंस्टाग्राम, एंड देन उन्होंने उसको फेसबुक के अंदर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. एंड देन दे थॉट 1-2 साल बाद कि हम इसको ओपन सोर्स कर देते हैं ताकि लोग उसको यूज़ कर सके. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. सो इनिशियली एक इंटरनल टूल था, इंटरनल लाइब्रेरी थी जो कि फेसबुक और पूरा मेटा का इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम यूज़ करता था विद इन देयर एप्लीकेशंस, विद इन देयर सॉफ्टवेयर्स, और उसके बाद उन्होंने उसको ओपन सोर्स कर दिया. So that's how React started. I became open source. So yeah, chunky it's backed by React. It's backed by Facebook, Meta. So that means कि React के पीछे बहुत dedicated, बहुत passionate और बहुत एक industry experts बैठे हैं जो कि रोजाना उसको maintain करते हैं. So it's a very good and amazing library to learn. So इसको हम सीखेंगे, and जो topics हैं जिसके बारे में जो जो हम सीखेंगे उसमें दैट इंक्लूड्स एज आई सेड कि बहुत बेसिक चीज़ें थ्योरी से, व्हाट इज़ रिएक्ट, वाई रिएक्ट, एक्सेट्रा. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनटू जो इंट्रोडक्शन है अबाउट JSX क्या होता है, रिएक्ट की एप्लीकेशंस किस तरह बनाई जाती है. अगर आप लोगों ने रिएक्ट ऐप का नाम सुना है, Vue.js का नाम सुना है, सो हम इन सब के बारे में बात करेंगे. एंड आल्सो मल्टीपल मेथड्स हैं इस टाइम पे एक बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने की, एक बेसिक टेम्पलेट बनाने की. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज. वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो या देन वी विल डाइव इनटू, जब हमें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो जाएगा, लेट्स से कि एक बेसिक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, देन वी विल स्टार्ट लर्निंग कि हम बाकी चीज़ें में कैसे करते हैं. लेट्स से फॉर्म वैलिडेशन हो गई, इवेंट्स हो गए, लाइक फॉर एग्जांपल एक बटन है, उस पर क्लिक हो जाता है तो उससे कुछ ना कुछ हो जाता है पेज पे. सो वो कैसे होगा. एक हमारे पास एक बहुत सिंपल फॉर्म है, लेट्स से जस्ट नेम है एंड सबमिट है. उस पे नेम लिख के सबमिट बटन दबाएं तो कुछ ना कुछ हो जाए. लेट्स से वो अलर्ट मैसेज आ जाए या एक कंसोल लॉग हो जाए या वो डेटा कहीं पे सेव हो जाए या स्टोर हो जाए. ये चीज़ें हम सीखेंगे जिसको कहते हैं इवेंट, वर्किंग विद इवेंट्स. सो या, एंड उसके बाद वी विल आल्सो टॉक अबाउट APIs के हाउ टू यूज़ APIs एंड हाउ टू वर्क विद APIs. सो दैट इंक्लूड्स थर्ड पार्टी APIs. हम स्टार्ट करेंगे विद अ डमी या बहुत बेसिक APIs जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, जो डमी जैसन APIs होती हैं. सो वी विल वर्क विद दैट. हम उसको सीखेंगे कैसे हम उसको गेट करते हैं,
कैसे हम उनके साथ काम करते हैं इन रिएक्ट। एंड सो ये सारी बेसिक चीज़ें होकर जब हमें आइडिया हो जाएगा, देन वी विल गो इनटू मोर एडवांस थिंग्स। एंड जो भी लैंग्वेज या जो भी फ्रेमवर्क या जो भी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी या टेक्नोलॉजी होती है, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू रन दैट किसी एक प्रोजेक्ट के जरिए। सो दैट्स वाई इसमें भी हम हैंड्स ऑन करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे दैट विल बी समथिंग सिमिलर टू ट्विटर। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली वो नहीं होगा जैसे ट्विटर है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं ट्विटर की, लाइक ट्वीट करना हो गया, लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, ये सब चीज़ें होंगी। Free of cost है? Nope, course is not free of cost. And yeah, if someone from the team can share the registration link with them, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कंप्लीट चीज़ों का, इंक्लूडिंग द प्राइस एक्सेट्रा। सो या एनी किसी भी चीज़ को समझने के लिए इट्स बेस्ट कि आप एक प्रोजेक्ट बनाएं। सो वो चीज़ हम इसमें भी बनाएंगे। एंड उसको बनाते बनाते आई विल आल्सो आस्क यू कि आप उसको लाइक कुछ ना कुछ उसको चेंज करके आप उसका एक अपना वर्जन बनाएं। सो इस तरह ये होगा कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास एक अपना एक काइंड ऑफ एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा, जिसको आप इंटरव्यूज में या इंटर्नशिप्स में या जॉब्स में जब अप्लाई करते हैं, यू कैन शेयर दैट विद देम एज एन एग्जांपल के थिंग्स यू डिड विद रिएक्ट। सो या एक काइंड ऑफ एक ट्विटर एप्लीकेशन होगी जिसमें वी विल बी आइदर यूजिंग फायरबेस या सुपरबेस, मोस्ट प्रोबेबली फायरबेस एज एन बैकएंड सर्विस, जिसके थ्रू हम लॉग इन करना, साइन अप करना, डेटा सेव करना या स्टोर करना, उसको गेट करना, अपडेट करना एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखेंगे। सो ये एक जनरल आइडिया है अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द कोर्स, कि उसमें क्या होगा, कैसे होगा। उसके अलावा वी विल आल्सो लर्न कि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स या टेक्नोलॉजीज या लाइब्रेरीज कैसे उसमें यूज़ कर सकते हैं। One of the popular example is Tailwind CSS. So we will also learn कि हम उसमें Tailwind CSS कैसे use कर सकते हैं in order to make our styling very easy and make it quick. So Tailwind CSS एक example है of how to use third party frameworks या tools या APIs या technology within React. So ये सब सीखने के बाद one other most important thing जो कि हम इस कोर्स में कवर करेंगे, that is Next.js. We will not cover each and everything of Next.js, but कुछ थोड़ा basic या beginner level के जो content है Next.js का, we will talk about that. So by the end of this course, आपको इतना आइडिया होगा कि आप React.js में apps बना सकेंगे, आप Next.js के बेसिक आइडिया या Next.js का को किस तरह यूज़ किया जा सकता है, या Next.js क्या है, या बेसिक एप्लीकेशन जो हैं वो भी आप बना सकेंगे इन Next.js, क्योंकि Next.js इज बेस्ड ऑन React.js। उसका जो स्ट्रक्चर है या सिंटेक्स है वो React पे ही बना हुआ है। सो दैट्स वाई दोनों का स्ट्रक्चर या सिंटेक्स सेम है। सो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको ना सिर्फ React का बट आल्सो Next.js का भी आइडिया होगा। एंड इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट हॉट टेक्नोलॉजी इन फ्रंट एंड इज Next.js। सो दैट्स वाई आई हैव एडेड दिस इन द कोर्स, ताकि आपको कोई चीज़ का आइडिया हो जाए। What about material UI framework? Again, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें you just need like very small integration या very small tweaks. So I will be using Tailwind CSS as an example. बट आप एक दफ़ा एक चीज़ सीख जाएं तो इट्स वेरी इजी कि आप दूसरी चीज़ को भी सिमिलर वे में आप उसको ऐड कर सकते हैं। सो आई कैन नॉट कवर राइट जितने स्टाइलिंग frameworks libraries हैं, but I will cover just one, and then whatever आपकी जो भी favorite है या जो भी आप use करना चाहते हैं, you can learn about that on Google, or you can use the same technique, or if there are still any question या queries, so आप उसको फिर WhatsApp group में या जो भी हम platform use करेंगे, you can ask that. Besides Tailwind, will we learn TypeScript in React? Nope, we are not going to focus on TypeScript in React. Maybe we make like a very short mini class on that about TypeScript, but it's not included in the main course. That is because we make most out of the React itself. But yeah, we might include TypeScript in the end, depending on
अगर तो जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है वो जल्दी हो जाता है, सो देन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सच एज नेक्स्ट जेएस या फिर लेट्स से टाइपस्क्रिप्ट इन रिएक्ट, सो वी कैन फोकस मोर ऑन दीज डिपेंडिंग ऑन हमारे पास कितना टाइम रहता है. बट नेक्स्ट जेएस इज फॉर श्योर, टाइपस्क्रिप्ट इज समथिंग दैट वी विल सी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम वी लेफ्ट. कस्टम नोड जेएस यूज नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू फायरबेस. डेफिनेटली हो सकता है, बट फॉर नोड जेएस या नोड जेएस का सर्वर बनाने के लिए यू हैव टू कोड आर दैट. एंड सिंस दिस सेशन या दिस कोर्स इज अबाउट रिएक्ट जेएस, इस वजह से हम नोड जेएस को कवर नहीं कर रहे. सो एंड हमारे पास कोई नोड जेएस का सर्वर है नहीं. सो इसी वजह से वी विल गो विद फायरबेस, ताकि जो लर्निंग कर्व है वो आसान रहे फॉर एनीवन जिसको नोड जेएस का एक्सपीरियंस नहीं है. अदरवाइज देन पीपल जिनको आइडिया नहीं है, दे हैव टू लर्न द होल न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज नोड जेएस. एंड at the end of the course, can I learn next years from you? We will have a class, maybe एक या दो class. So yeah, yes, you will. This course will only cover front end side. Yep, React is about front end, but also we will talk about कुछ चीजें हैं जो कि it can help you about in terms of सर्वर साइड रेंडरिंग. अगर आपको आइडिया हुआ हो तो वी विल टॉक अबाउट सर्वर साइड रेंडरिंग. एंड उससे जो है तो although it's a front end, but especially in Next.js, we will talk about server side rendering. So इससे ये होगा कि although it's a front end thing, but you will still get an idea कि आप उसको like कुछ let's say एक authorized या authenticated page है जो कि आप पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते. लेट्स से कोई इस तरह का पेज है जो कि आप सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स को दिखाना चाहते हैं. सो इन दैट केस you can use Next.js without Firebase या Node.js या इस तरह का बैकएंड सर्वर, एंड आप उसको उसमें जो है तो you don't need to use any of these technologies. So we will talk about that कि वो कैसे कर सकते हैं, and that's very simple. So yeah, although it's a front end course, but इस तरह की चीज़ें जो हैं we will cover that. AppGuide is best or Firebase? कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. दोनों के प्राइस पैकेजिंग हो गई, प्राइसिंग हो गई, दोनों में कुछ चीज़ें हैं जो एक में ज़्यादा बेहतर है, कुछ चीज़ें हैं एक में कवरिंग है, दूसरी में नहीं है. सो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, इट डिपेंड्स. सो ये ऐसा है कि सेब अच्छे हैं या मार्टे. बिफोर आई मूव ऑन, एक सबसे पहले एक वसीम भाई का क्वेश्चन था. लेट मी गो थ्रू दैट. सो इज इट बेनिफिशियल फॉर डेवलपर जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस हो? मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ, देन इट्स अप टू यू टू डिसाइड. द थिंग इज के इफ यू नो द वेरी बेसिक्स, लेट्स से जस्ट अबाउट रिएक्ट क्या है, किस तरह है, और बेसिक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको आइडिया है, बट यू आर नॉट श्योर कि आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट किस तरह बना सकते हैं. यू हैव नेवर मेड अ प्रोजेक्ट बिफोर एंड यू वांट टू लर्न दैट, देन दिस कोर्स इज फॉर यू. इफ आपने पहले प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं इन React.js, आप बिगनर नहीं हैं इन React.js, आप को प्रोजेक्ट्स बनाने आते हैं, आपने Next.js में भी काम किया हुआ है, देन दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू, क्योंकि इसमें हम यही कुछ सारा कवर करेंगे. ऑलराइट, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? Internship opportunity for remote based of end of the course. This is something that's on you. The only guarantee जो मैं आपको दे सकता हूँ that is by the end of this course आपके पास जो knowledge होगा that is enough to get an internship or get a junior position. Now आपको वो job मिलती है या नहीं मिलती, that depends on how you perform in interview. But in terms of कि जो skill set आपको चाहिए होता है for junior position या for internship, that is up to you. That is something that जो हम आपको deliver करेंगे. जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर इन इंटर्नशिप React.js डेवलपर की, उसकी भी जो नॉलेज चाहिए दैट इज इन द कोर्स. डिपेंडिंग ऑन आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती, दैट इज
completely on you कि आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हैं. बट अगेन जो नॉलेज रिक्वायरमेंट, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, ये सब कुछ जो है ये आपको इस कोर्स में मिलेगा. सो अगेन वी विल बी मेकिंग समथिंग लाइक ट्विटर, एंड बहुत से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत से एप्लीकेशंस जो इंटर्नशिप्स में जाते हैं उनके बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं. लेट्स से टू डू एप्लीकेशन या कैलकुलेटर जो बहुत सिंपल होते हैं. बट इफ़ यू गो देयर विद अ ट्विटर एप्लीकेशन या ट्विटर प्रोजेक्ट या थोड़ा सा उसको चेंज करके लेट्स से अ ब्लॉग, फुल फ्लेज ब्लॉग, सो दैट इज़ डिफरेंट एंड दैट इज़ आई कैचिंग. So you will get the knowledge that you need. Will you cover any course content today? Nope. I will be answering your questions only today. All right. Course duration and timing. I assume this is mentioned in the हाँ, this is mentioned in the page जो कि दानिश ने शेयर किया हुआ है ऊपर. कोर्स ड्यूरेशन जो है 2 months है, and there will be approximately 3 classes in a week, each of them around, I think, 60 to 90 minutes on average. I have done Yes, yes English. this is also mentioned on the website. The course duration is of 2 months. It will be 6 hours per week, inshallah. Yeah. All right. I have done BS English, so I am a big number question. Do you offer on morning classes? So as far as I know, I'm assuming there are no recordings of this session. If there is, Danish, please correct me. But जो live session होंगे, that will be on in the evenings. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? शुक्र है सर, ठीक ठाक. सर एक चीज़ इसमें मैंने आपसे पूछनी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस दिन ये क्लासेस होंगी तो क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर, तो ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी की भी क्लासेस हैं और इस तरह से मतलब शेड्यूल. तो सर क्या ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे या सिर्फ ये वन टाइम ही आप मतलब जो लाइव क्लास लेंगे उसी तरह से ही होगा? बेसिकली आई एम फ्रॉम पेशावर, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि ज़रा कभी लाइट का भी इशू है, कभी नेट का भी, इस वजह से. Danish, maybe you can answer this. Yes, of course. यार please अपना नाम repeat करो. I failed to hear your name. सुमेर. सुमेर, हमारी जो क्लासेस होती है ना वो होती हैं हमारे एडवर्सिटी पोर्टल के ऊपर, और जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड पड़े होते हैं. तो लाइट का कोई भी इशू नहीं है. आपको जब भी टाइम मिलता है ना, अगर आप ऑनलाइन ले सकते हो वेल एंड गुड, नहीं ले सकते तो वो रिकॉर्डेड सेशन आपका पोर्टल पे पड़ा होता है, वो आप जब चाहो उसको जाके दोबारा ले सकते हो, सुन सकते हो. सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू. और बिल्कुल सर, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ऑनलाइन ले लूँ, लेकिन आपको पता है कभी पाकिस्तान है तो ज़रा कोई ना कोई इश्यूज आते ही रहते हैं. और दूसरा सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे अभी ये इस कोर्स में मैं एनरोल हुआ हूँ, तो क्या एज अ फ्रीलांसर या एज अ डेवलपर मुझे मतलब ये, क्योंकि मैं सर सेकंड सेमेस्टर में इस वक्त एनरोल हूँ, तो क्या ये आगे मुझे हेल्प करेगा जॉब हंटिंग में या एज अ क्लाइंट हंट में, मैं अगर फ्रीलांसिंग की बात करूँ? प्लीज़ ये ज़रा बता दें. Definitely. अगर तो आप जब आप इस कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स अगेन आपके पास वो नॉलेज होगी जो आपको एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए चाहिए. अगर आपके पास एज अ फ्रीलांसर आपके पास रिएक्ट एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है जो कि आपने रिएक्ट में बनाना चाहते हैं या बनाना क्लाइंट की डिमांड है, आप उसको बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एज अ फ्रीलांसर. एंड सेम थिंग एज अ एम्प्लॉय, इफ आप जॉब देख रहे हैं, सो यू हैव are those jobs in your to do list या जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है React.js. सो आइदर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं या एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, इट वर्क्स फॉर बोथ. ठीक हो गया सर, थैंक यू. राइट.
welcome. Yeah, so I wouldn't be a singer, so I'm a beginner. My question is, can I learn? You can learn, लेकिन आपको थोड़ी बहुत prerequisites चाहिए होंगे, जो कि है how does web work, like बहुत general thing, और थोड़ा बहुत HTML, CSS और कुछ JavaScript. Now ये चीज़ें जो है आप YouTube से क्रैश कोर्सेस ले सकते हैं, और आपको उन क्रैश कोर्सेस से आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि इस कोर्स में जो भी हम कराएंगे आपको वो सब कुछ समझ आएगा. सो अगर तो आपने पहले वो किया हुआ है लाइक HTML, CSS और JavaScript, नॉट इन एडवांस लेवल बट कुछ बहुत बेसिक्स आइडिया है, then you can continue with this course. Yeah. And then before I come to next question, एक किसी का question था, we will be covering Redux. So yes, this is something I forgot to mention, and thanks for mentioning this. Yes, हम Redux भी हम Redux भी यूज़ करेंगे, and for those of you जिनको आइडिया नहीं है Redux का, it's again एक टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क लाइब्रेरी that we use within React, जिससे हम स्टेट्स मैनेज कर सकते हैं. बाय स्टेट्स आई मीन के जो हमारे पास डेटा होता है बिटवीन डिफरेंट फाइल्स, हम उसको मैनेज कर सकते हैं. So this is something very famous, very popular within the React ecosystem. So that's why we will be covering this in our course. हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. We start with the very basic Redux basically है क्या, उसके components क्या है. Then we will go with like a very simple project, and then हम उसके बाद उसको अपने project में implement करेंगे. So yes, we will be covering and we will learn कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. Yep. I'm a Node.js developer with 3 years of experience. Now I want to upgrade my skills to complete my full stack. So what your institute will help in this? Again, this is a React course. If you are a Node.js developer, that means कि आपको backend का idea है, and now you want to start learning front end. And since React is a front end technology, so by learning front end, by learning React.js, आपको आप एक मन स्टैक डेवलपर बन सकते हैं. So we will help you learn एक मन स्टैक का जो एक main component है, that is React. So we will help you with that. Again, offering any morning classes, live classes शाम को होगी, but recordings होंगे on the portal. So आप उन recordings से आप पैसे सीख सकते हैं. And again, async conversation भी होगी, which means कि if you're stuck somewhere, if you need help, you can ask questions. In market, which backend language is most using with React? Usually Node.js use होता है, but उसके अलावा भी जो है तो sometimes people use Django. So it's always a mix. Like जो top 2 है, that is Node.js and Django. But उसके अलावा जो है तो see it's like दो चीज़ें हैं, और उन दोनों को हम इंडिपेंडेंट यूज़ करते हैं. सो इवन अगर ना Node.js हो ना Django हो, कंप्लीटली कोई दूसरी बैकएंड टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसके साथ भी React काम करेगा, क्योंकि APIs बनती है. सो या बट मोस्ट used language is usually Node.js. How much a background in Vue.js help me in React.js? If you know Vue.js, so that I assume कि आपको basic JavaScript का idea है, which means कि like बहुत basic चीज़ें, loops हो गए, functions हो गए, scoping हो गई, this keyword हो गया, maybe hosting हो गई, etc. अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया है, क्लासेस हो गई, क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं in JavaScript, and functions हो गए. So most importantly functions. So अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया है, then you can go with this course. It's enough for you to get into this course. Yeah, run React. I'm currently enrolled in a full stack web development in this course, but just not started. Nope. You need to know JS, advanced JS नहीं, but basic JS.
एंड उसके लिए इफ़ यू वांट टू लर्न दैट, सो आप उसको यूट्यूब से सीख सकते हैं, किसी भी यूट्यूबर से आपको उसका आइडिया हो जाएगा. सो मे बी this is for everyone. Let me try sharing my screen and we can talk about this. All right. So uh, you're new to web development. Let's just search for JavaScript crash course and see you get all of these courses. My recommendation is this first course by Traversy Media. Let me zoom this. Traversy Media. This course. Then this one by Mosh Hamidani, Programming with Mosh. These two are the instructors that I know. So I suggest maybe up to stop confusing you. Maybe you can go with this one, JavaScript Crash Course for Beginners. This is the course you can go with. 1 घंटा 40 मिनट का course है. But that will give you enough idea to learn how to work with JavaScript, and that will be enough for you that you कि आप React में काम कर सके. But most important thing is कि अगर आप एक दफ़ा उस कोर्स को go through कर जाएं and then you start joining the classes, आपको समझ नहीं आएगा. You हैव टू मेक श्योर कि आपके जो बेसिक्स हैं या उस कोर्स में जो पढ़ाया गया है वो चीज़ आपको कम्प्लीटली, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको कम्प्लीटली अच्छे से समझ आ जाए. और मे बी यू ट्राई 1 or 2 प्रोजेक्ट्स एज वेल. तभी आपको जो है तो इस कोर्स का आइडिया होगा. क्योंकि इफ़ यू डोंट डू दैट, इफ़ यू जस्ट गो थ्रू दैट वन कोर्स एक ही दफ़ा पे, चांसेस आगे 1 वीक बाद आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो आप भूल जाएंगे. सो दैट्स वाई माई सजेशन इज़ के you also do 1 या 2 छोटे मोटे projects. What is Rust and how is it differ? Rust is a completely different language. जिस तरह JavaScript है उसी तरह Rust है. It's a completely different language. Yeah, whereas React is a library जो कि JavaScript पे बनी हुई है, मतलब it's a JavaScript library, and Rust जो है that is a language itself. My next question is related to, as of now, nope. मेरा कोई complete month stack का course नहीं है. ना ही मेरी as such कोई offering है as of now. Alright, कोई mic में फूंक के दे रहा है, कोई question है अगर किसी का तो feel free to ask on mic. Alright, more questions? एवरीवन, आपका जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोर्स या रिगार्डिंग दिस फ्रेमवर्क रिएक्ट जेएस, आप जो भी जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई कंफ्यूजन है जो आप दूर करना चाहते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, वो भी आप पूछ सकते हैं. अरसलान सर इज हियर विद अस, तो ही विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. सो प्लीज आस्क अवे. जवाब देने का तरीका सिर्फ एक यही होता है कि क्वेश्चन पूछा जाए. तो वी इनकरेज ऑल द क्वेश्चंस. थैंक यू. उसके अलावा I just shared a link, एक PDF है in the chat. यहाँ पे आपको एक complete course outline मिल जाएगी कि आप let me mute this person. All right. Yeah. Coming to the main point, how much can we expect earning at the end of the course? This depends on you. This depends on the company जिसको आपने join किया है. But to give you a basic idea, if you join anywhere in Pakistan as a junior developer, someone जिसके पास 1-2 projects हैं, side projects या main project, कोई भी किसी भी किस्म के project हो, but as a junior developer या as someone जिसने अपनी first job start की है, you can expect somewhere between 30 to 60,000, somewhere within that range. That is if you join a Pakistani company. If you go with a remote job किसी भी यूरोप या नॉर्थ अमेरिका की कंपनी के साथ, then you can expect
100K या 100K plus. So again, that depends on what type of company that is. How good are you in terms of negotiation? Um, so interview में आपने कितने अच्छे से negotiate किया है with the interviewer in terms of salary या दूसरे perks, and कौन से मुल्क की या किस region की company है. So it depends on all those things. But yeah, मैंने आपको एक basic idea दे दिया है कि क्या range आप expect कर सकते हैं. And this can change डिपेंडिंग ऑन कि उस टाइम पे क्या हालात है, करेंसी कितनी है, करेंसी कितनी डिवैल्यू हुई है, एंड ऑल दोस थिंग्स. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज एहसन। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो इससे मुझे ये पूछना था कि ओनली रिएक्ट आप पढ़ा रहे हैं या एंगुलर भी आप पढ़ाते हैं? नो, जस्ट रिएक्ट. जस्ट रिएक्ट। ओके सर, मेरे जो एक कंसर्न है वो ये था मॉर्निंग का क्लासेस का, तो मुझे एक्चुअली इवनिंग में टाइम्स नहीं मिलता। सो अगेन आप वही कर सकते हैं कि आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, वी कैन गो थ्रू दैट. अनदर थिंग इज के यू कैन पेयर अप विद समवन कोर्स के अंदर, एंड यू टू बोथ ऑफ यू कैन, like let's say someone जो कि live session सुनता हो या सुनती हो, so you can pair up with them and you can ask, like you can maybe do like one-on-one sessions उनके साथ किसी और टाइम में, कोई भी इस तरह टाइम जो दोनों के लिए suitable हो. And उसके अलावा if you still have any questions, so we can like again async conversation सबके लिए होगी, so you can do async conversations as well. So ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू you can run if that works for you. ये एक्चुअली सर हार्डली सी हो जाएगा कि वीडियोस देखना, रिकॉर्डिंग सुनना, तो एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर द मॉर्निंग क्लासेस. आई डोंट थिंक सो इट्स वर्क फॉर मी. Understandable. Again, we do understand. Most of you are students, and किसी की टाइमिंग मैच होती होगी विद द टाइम जो हमने रखा हुआ है, किसी की नहीं होती होगी, किसी के लिए लाइव सेशन ज़्यादा बेहतर होगी, किसी के लिए वीडियो कंटेंट ज़्यादा बेहतर होगी, मे बी किसी के लिए टेक्सचुअल कंटेंट बेहतर होंगे. सो depending on you, depending on what's your preferences. So yeah, but live sessions हैं, if that doesn't work for you, if you cannot join, recorded sessions होंगे. If you're still confused, you can ask someone in the course. But even if that doesn't work for you, so yeah, maybe you can take React documentation, yeah, find something that really works for you. We will learn anything related to Node. Maybe the only thing we will learn about Node is कि हम Node.js कैसे इंस्टॉल करेंगे, because एक prerequisite है to work with React. But उसके अलावा as far as I know, as far as I remember, there is no such content about Node.js. So yeah, it's purely about React. हम React को कैसे use करते हैं. So there will not be any such content about Node. ट्यूरिंग में जंप कैसे किया जाए, ट्यूरिंग का टेस्ट कैसे होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. मैंने उसका टेस्ट नहीं दिया है, ना ही मुझे आइडिया है. सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस, टू आंसर दिस. असद इज आस्किंग कि हम रिएक्ट के बारे में कुछ सीखेंगे. सर ये सारा सेशन ही रिएक्ट के हवाले से. सो यस, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रिएक्ट. एंड अगेन मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ था जो कि मैंने फिर से कर दिया है. यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स कंटेंट इन डिटेल मिल जाएगा. ऑलराइट, मोर क्वेश्चंस? सर वालेकुम सलाम. सर क्या इसमें मतलब बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताया था, जैसे डॉम मैनिपुलेशन वगैरह? आपकी आवाज़ कट गई है. मतलब डॉम मैनिपुलेशन के बारे में थोड़ा बेसिक बताया जाएगा इसमें, डायरेक्ट रिएक्ट जैसे
आई एम सॉरी, मुझे फिर भी समझ नहीं है, मे बी आप इसको अगर टाइप कर दें. We cover everything about React.js. That's a good question. But the thing is कि one is चीज़ें हमेशा अपडेट होती जाती है. So the things that we will be cover. Quick answer to this is no. Wrong answer to this is कि we will talk about the most important things. क्योंकि if we talk about each and every bit of React या फिर कोई भी course हो जिसमें we talk about each and every bit of that thing, it might take us maybe 40, 50, 60 hours to go through that. So yeah, हम उन बहुत माइनर चीज़ों को नहीं करेंगे या सीखेंगे. Like let's say एक फीचर है और उसके जो है तो 10-15 डिफरेंट यूज केसेस है. सो वी आर नॉट गोइंग टू गो विद उन सब यूज केसेस पे, बट वी विल गो विद लेट्स से एक या दो, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए. क्योंकि अनदर थिंग इज के दिस कोर्स इज माय गोल इज के यू आल्सो गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू डू सेल्फ लर्निंग. क्योंकि यू हैव टू डू सेल्फ लर्निंग अगर तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं. So you have to go through documentation, you have to go through videos, etc., examples, blog posts, etc. So this will give you a start. आपको कुछ थोड़ा बहुत idea होगा, and then moving forward, we will go with you will get some idea from the things, and further on, if you want to like dive really deep into it, so then आप further documentation देख सकते हैं, use cases देख सकते हैं, etc. But that being said, still by the end of this course आपको इतना आइडिया होगा, इतना आपके पास कंटेंट होगा या नॉलेज होगी जिससे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें. React hooks, React routers, React DOM, of course, Redux toolkit, custom hooks, of course. Most of these things will be covered. React DOM के बगैर React काम ही नहीं करेगा on the website. So yeah, hooks भी जो है तो we will be using that क्योंकि हमें states manage करनी होगी. So yes, Redux toolkit, of course. Router, of course, navigation हमें करनी होगी, go with between different pages. So yes, we will go with cover all those things. More questions? Guys, sir is asking if there are any more questions. If there are, so just ask right away. और अगर आप लोगों के और questions नहीं है तो फिर we will conclude with the session. React query. Again, there are like I would say like more than 100 such packages or such external libraries. So we will not be covering all of them क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं. But we will be covering जो बहुत basic या बहुत beginner या बहुत essential है in making projects. So as of now, React query जो है, this is not something in the list. But let's say हम project बनाते हुए हमें उसकी ज़रूरत आ जाए, तो we will start working on it. So yeah, but again, in इस तरह की such libraries जो है, there are a lot of them. So yeah, depending on if we need them, so we might use them. But as of now, there are no plans of using React query. Yes, this course will cover functional components. And about the other question, taking help for your projects. Yes, I am always available for any asynchronous conversations and help.
Any more questions? I guess काफी सारे questions answer हो गए and our sir Arsalan has very efficiently and professionally answered every single question. Thank you very much, Sir Arsalan. I guess we should conclude with the okay. Sikandar Ali has one last question, so let's hear the question, then we'll end the session. सिकंदर, अगर आपको टाइप करने में टाइम लग रहा है ना, तो आप बेशक माइक ऑन करके बोल लो, देयर इज नो प्रॉब्लम. Nope, हम basic JavaScript नहीं सीखेंगे. That is a prerequisite that I expect कि आपको idea होगा before joining the classes. And अगर आपको idea नहीं है, so you can go to YouTube और वहाँ से आपको idea हो जाएगा by just going to any of the JavaScript course. So maybe one of them is let me share the link here. This one. फी स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट, कोर्स के अंदर कंप्लीट मॉड्यूल्स क्या है, टाइमिंग, ये सब चीज़ें जो है आपको लैंडिंग पेज पे या कोर्स के पेज पे मिल जाएगी. Danish, if you can again one more time share that link with them. Yes guys, I'll share the link. उसमें आपको बाकी भी सारी डिटेल मिल जाएंगी. Just 1 minute. And maybe you can answer this, Danish. No internship program at your platform after completing the course. इसमें आई वुड लाइक टू ऐड, जो हम लोगों का पोर्टल है, वी हैव अ सेक्शन देयर जिसके अंदर यू विल बी एबल टू रीच डायरेक्टली टू 190 प्लस टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो कि जिसमें मतलब आप व्हाटएवर आपने सिर्फ अपना एक मैसेज लिखना है, कवर लेटर जिसको कहते हैं, साथ यू हैव टू अपलोड योर सीवी या रेज्यूमे, और योर 190 plus companies would be notified about you कि you are looking for a job as a front-end developer or in React.js. So that's how you can get a job and internship opportunities. Is this the only Sikandar, we will have other batches as well. Once this course has completed, we will launch the next batch for React.js, and in parallel, we will also be having other courses as well. Sorry to cut you out, Sir Arsalan. You wanted to say something. Yeah, it was the same thing जो आपने कहा. Okay. Yeah, but with that, I think we can wrap the session. Yes, it was a great session with you, Sir Arsalan, and thank you for all the attendees and participants for your valuable time and your amazing questions. This was an amazing event. Thank you again, Sir Arsalan. Thank you for your time. Thank you for coming. We'll all the students will see you in the course, inshallah. Inshallah. All right. Thanks for everyone for joining, and hope to see you soon.